Hello and welcome to Arunachal News 24/7, the first digital news portal of Arunachal Pradesh, and I am Sapna Tayam Taku reporting from New Delhi. So right now we are here to meet a person who need no introduction, but I would like to say we are with Sir, IPS officer, the first IPS officer from Arunachal Pradesh, and he currently Hibu ROBIN sir is posted as Special Commissioner of Police, New Delhi. So Hibu ROBIN sir was also the Chief Secretary Officer of Rashtrapati Bhavan and also holds the position as. You want to put in this background? No, sir, it's okay. We are live now. Huh. Okay. So, sir, how are you? As the people of Arunachal wants to know. Oh, I am very fine. It's a privilege to serve in Delhi. Apart from a job, we are doing many other activities, something like reaching out to our people when they are in need. Mm-hmm. So, sir, do you miss Arunachal? Yes, my whole India is my country. Yes, I miss because I was born there. I used to go regularly to meet my mother. Mm-hmm. Okay. Yeah. So, sir, you being posted here at New Delhi always raised your concern about women's safety and against racism towards Northeast Indian people residing in Delhi. So, how's the full story and experiences you had so far? Look, a lot of our youngsters, they are now migrating to the cities, not only to Delhi but all over the country, even abroad. That's a very good sign. Having said that, but the experience for last 17 years in Delhi as a young officer, as a DCP, now in a higher rank as a special commissioner, the problem is that they all, those are coming for education, okay, that's very good. But those who are coming for the job, most of them are after a skill training they undergo. And after coming, finishing the skill training, they land up in a private unorganized sector. And once they land up in a private unorganized sector, so there is no job security, there is no proper environment, there is no possibility of going higher up in your career, there is no scope for further training. So as a result, after that euphoria skill training, they land in a private sector, and it is virtually at the disposal or pleasure or by the whim and fancy of the private, what is called these employers. And since there is no proper forum where they can seek help if there is a problem of, like our experience, like non-payment of salary, or there is a harassment, or there is exploitations, or there is a indirect form of discriminations. So more or less they are left to fend themselves. And once they are left to fend themselves in cities, everybody is not well connected. So they are virtually into that cocoon role of in the small industrial house, lowly paid, living in a very, very scanty and dumpy place where it is unhygienic. As a result, since they don't have much money, they can afford to be in a better place. They can't every time go to home. So this lead into all kind of problem. Second, then even while struggling in this private sector also, more or less many of them, they come without knowing the way, like language of that particular area. Like if you're going to Mumbai, if you know Marathi, yes, you'll be accepted. If you're going to Ahmedabad, if you know Gujarati, you'll be accepted. But the problem is that they only a little bit of broken Hindi. So as a result, then you are something like a lamb or deer in the Jurassic Park. So since our helping hand NGO, which we are running for all over the country, we have volunteers from all over the country. The problem what we are finding is that these are the most vulnerable who are not able to reach out to the authority or to the community, either women commissions or what is called a lawyer forum or even NGOs. So back home because of so many reasons. So we have so many examples which I can go on and on. So this point is something really worrisome, number one. And number two, then another second point is that most of them, those who are willing to get good education, that's very good. But we have found in a recent time that many of them, they just landed in the cities by seeing the advertisement in the
in the internet, or some of the so-called educations or awareness campaign back home in the oldest state capital and other town of the northeast. They join some engineering college, some medical, some MBA, and when you reach here, you found that they don't have a proper infrastructure, nor they have a proper faculty member, and many of them are not even recognized. So I think this is another area which our people are not aware of, that they just land up, and once they pay so much of money, then we have so many cases, even paid by a very big officers, even from many leaders, who believing those people, and unfortunately these so-called education, private education institution, they come to our state capitals and they are mixed up with the local people. And I still remember, even they used to send advertisement even to me also, that this is our institution, we have so much of facility, please join us, please sponsor your son or daughter can get this degree, that degree, so and so forth. So this is also another area which is being faced by our people back home. Then third point, what I would suggest is that many of our Northeast people, they are started doing business with our other cities, business, what is called partners. That's very good. But doing a business without application of mind. I have an example, like from Longning and from the Khonsa district, some corporate women, some society, they sent almost half a train, 4-5 bogies of all those local agriculture product. So there's also, after some kind of just a purposefully, a very simple agreement. Then all those people who they have received in Mumbai and in other part of the city, they did not pay their money, but they have no means to come here and to follow it up. So here is the lack of that business forum, connectivity, and I would say a grooming, training before you indulge into that kind of what is called trading partnership in any field. So that also lead another kind of problem. So we have so many people who have invested so much of money, not only in the agriculture product, even even I know one of our ex-leader who had promised by one of the rich man to start a meat factory in one of our state. So he had paid lakhs of rupees. So there are so many unbelievable, bizarre story of non-application of mind, and you are trying to invest money in the cities. As a result, many of them become a victim of this kind of a fraud or this one duplicate fake business people. Then fourth point, what I want to tell you that people are now coming out for visiting the country. Well, no problem, but there are so many religious tour, education tour, just for your even for holidaying. We have found many of our people, they have landed. Just recently one example I'm telling from Assam. They book a ticket for Vaishno Devi. So when they reached there was no proper arrangement. The room was dingy, no proper bathroom. So this is another area where we are. I would say a lack of proper guidance or lack of awareness. We are so gullible most of our time. Then another point I want to bring it to your notice, that is number 5 is that to fall in love is the most beautiful thing on this earth. But to fall in love with the right person is the $1 million questions. I'm not against, nor I'm doing any moral policing. What today I find is in our NGO, everybody, most of the young girls and boys, they're coming to us is that somewhere or other they feel when we try to do an awareness campaign with our youth, they say कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला अलग है. But they had a blissful life for a few years. And my advice is that I'm not against falling in love. What I'm telling you that because if you want to have a long life relationship, you have to have the blessing and do it in a legal way. Get a civil marriage. Call your parents of that your either African or Indian or whoever maybe, or from foreigner, anyone. And you bring from your side also, do a court marriage in Delhi and back home. Let them know that you are into a legal relationship. But then without that, if you started living like a gypsy life, which resulted into, unfortunately, so many what is called untoward incident of
it's like a termination of pregnancy, health is affected, you become depressed, you are abandoned after a few years in cities. We have buried so many of our girls, even boy also, they have been left out, they have nothing to look forward. So this is one area I find it something every day now and then. I find those who are coming from there see the hallabol or the glittering of our city life, but in due course of time, since they are not economically independent, they are not aware of the what is the you know the heartless city, heartless city, which in they are, everybody is unto themselves, they become victim, and as a result, many of them die, they get all kind of incurable disease, some of them become mentally depressed, committing suicide. We have so many of them are doing that. So these are some of the problem our people are facing in the cities in India, even in abroad. So there are, I can go on and on, but these are the major problem which our people are facing in the cities. So, sir, how do you feel challenging? How challenging this is to maintain and to hear this kind of news and activities every day in your life? Sapna, I want to tell you one thing, that why everybody asks me, ki, why you, why Robin Hibu is, doing all the time for the Northeast people. Reason is that I know what it means to be all alone in the cities without money, struggling every day and day night. I struggle in Delhi University, I struggle in JNU. When we were struggling, there was no one. So even we didn't have somebody to attest my certificate also. I still remember when I came to Delhi. After that, in the railway also, even in the S5 seat number 17 of the Brahmaputra Mail, I was kicked out by the man in uniform in 8 numbers, and they say कि बहादुर तुम उधर बैठो. It was a very humiliating experience. If I remember, आज अगर याद करता तो आज भी दिल में बहुत दर्द होता है. I spent my night near the in the bathroom. No TT came to check, because where there is a 4G, generally nobody come up there. Then I landed in the Arunachal Bhavan, morning 7:15. Waited till 6 evening PM. I need one small place to sleep, so because I had no one at Delhi, no food, no water, whole day waiting. In the evening time when DRAC, at the time he was Mr. Majumdar, is no more an IS officer. So he used to tell him, yes, he asked his chokidar, कहीं जगह होगा है? Then I still remember that Yadav, the chokidar, sir जगह तो नहीं है, लेकिन एक गोदाम में आधा प्याज आलू है. So he said कि ठीक है. Then he just, even without looking at me, he went back. Yadav took me to that godam. I found half of it was filled up with onions and potatoes. So I had to keep some of the newspaper on the side, clean the room, no fan. It was in the hot summer. So I spent my 7 days in that godam. I went for interview with the JNU. I ate my food from outside, roadside, that chana wala or roti wala, whatever maybe. So I struggle. So I know what it means to be left alone in the cities. So that inspired me to do something back for our people from Northeast and from Himalaya. Second, I was inspired by the life and work of the Mahatma Gandhi. Since I am from the Mahatma Gandhi Kasturba Ashram at Zero in Hong village. So they are, from class 1 to class 7.5 years, means class 1 to class 8. There was only one lady teacher who was Gandhian, Gunobaide, who really inspired me, who was only teacher who taught us English, Hindi, math, science, everything. So all these factors made me to, why not? I'm in a better position. God has been very kind to me. I become IPS officer. At this young age, I'm one of the youngest DGP rank officer in the whole of the country. Won the record number of medal. I went to UN. So why not? Why I can also live in a peaceful way, enjoying my life. Now I thought, no, I want to share my little contribution to back to our people. That's what I'm trying my best. It's not only me helping, and it's by all of our. We have IFS officer, we have an IAS officer, we have a Supreme Court lawyer, we have an entrepreneur who have joined me. So as we have become a very good force to reckon in the cities. So if there's something any happen,
we are there for our people if there's no one. It's so good to hear it, sir. And my second question will be, sir, what's your opinion on female safety in current period? Because safety government is doing everything for the female safety by Delhi, by state government and everywhere. Yes, there are, the reports every day we hear it, we see it. So apart from government taking out all the step like a PCR, special unit, women cell, so on and so forth, and I feel even the society should also chip in, and girl themselves should also be chip in. Why I say society and girl? Number one, let me come to a girl. For example, like if you are a girl, if there around your surrounding, if there are a self-defense or karate, boxing, taekwondo, if there's some club, join, learn self-defense. I have two daughters. So today, both of them are black belt. I feel more safer with them than with my bodyguard. But they are black belt too. So they can bring down 2-3 people at one go. Number one. So you have to be physically fit, learn some tactics for self-defense. Number one. And number two, I feel I'm not trying to do moral policing. Again, I'm telling you, you have to be careful. I'm not saying you wear this, you wear that. But you have every right to wear whatever you want. But when you are like living in an environment where people are, a little bit like a villager, or they are not that westernized, there you become odd man out if you wear something very, I won't say different, but some kind of a unusual dress. So you have to be respect that local sentiment, and you should also try to adjust wherever you are and learn the language. And you should be very before you come to the city, in a city or to a town outside of the notice, you must know where you are going, who are the people where you can reach out in time of emergency. You must have their number and participate in a community activity, not only in your community activity, but also you must accept that community, like you are like in Delhi. It's better you learn here. The Haryanvi and the Punjabi are in majority. If you can learn their way of life, if you join in the festival, if you learn a proper Hindi, then they'll accept you. Then you must participate into their social activity like होली हो, दिवाली हो, जो भी हो. जब तक आप उन्हें भी नहीं अपनाएगा, वो आपको कैसे अपनाएगा? हमारा नोटिस का प्रॉब्लम ये है कि मैंने भी इस पर बहुत बार में जब इंटरव्यू में ये भी बोला कि हम अपना पोर्क बना लेते हैं, हम अपना आप खा लेते हैं, दूसरों को तो यू डोंट इनवाइट देम. हम अपना ही एक्समास मनाते हैं, दूसरों को तो बुलाते नहीं है. हम अपना मोपिन, सोलुंग, जो भी अपना फेस्टिवल मनाता है, यू डोंट इनवाइट हिम अदर्स. सो यू हैव टू बी interactive in your approach. One, two, you must participate in neighborhood wherever you are living. अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो तुम भी हिंदी सीखो, तुम भी मराठी सीखो, तेलुगु सीखो, पंजाबी सीखो. Contribute wherever you can. You be an ambassador from Arunachal or Nagaland or Mizoram. Tell them this is our dress. On their festival, उसको पहन के जाओ. They'll be happy to, receive a greeting from a girl from a Mizoram or Naga or Arunachal. जब आप वो नहीं करेंगे तो अपना अलग सा मतलब समथिंग यू फील कि नहीं ये तो हमारे से नहीं होगा. जब तक आप ये एडजस्टमेंट नहीं करेगा, आप कहीं भी जाओ, यू विल नॉट बी adjustable, you will not be happy, and you will be always more or less prone to face any kind of problem. So women's safety is to come out. This is your country. ये तुम्हारा देश है. And learn wherever you are the best of the ability. Then of course, don't just my advice through your channel, since it is one of the very popular channel in Arunachal Pradesh, कि before you come out for either education or job or skill training, पहले तो 4 चीज तो कर लो. I would like to your viewer, first तो देख लो कि तुम कहाँ जा रहा है, क्या ये रिकॉग्नाइज है या नहीं है. नंबर 1, अगर रिकॉग्नाइज है तो क्या उनके पास में सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है. अगर उनके पास नहीं है तो पहले जो उस संस्था में काम किया है या उस कंपनी में काम किया है, ट्राई टू फाइंड आउट either through googling or through your community what is called organizations, or through our helping hand also. Send an email to us. We'll help you to find out जिस कंपनी में जा रहा क्या वो सही है ना गलत है. If you don't do this homework, then automatically you are taking a risk. तुम जंगल में जहाँ शेर है उसमें तुम घुस रहे, पता नहीं कब क्या होगा. Second,
आप जब बाहर में आ रहे हैं और अगर आपका पास यहाँ में किसी का साथ प्यार भी हो जाता, अच्छी बात है। जो मैंने पहले बताया, you have to be very careful in selecting your life partner. I'm not asking you तुम locally शादी करो या इसको ना करो. What I'm saying is that कि before you plunge into giving your mind, body and उसको agree करने से पहले ये तो सोचो कि जिसका साथ आप रिलेशन रखने जा रहे, क्या वो लड़का काबिलियत है, क्या उनके पास राशन कार्ड है तुमको खिलाने का, क्या इज यू विलिंग टू मैरी यू ऑफिशियली इन द कोर्ट, क्या उसका माँ पिताजी उसको जानते हैं कि ये लड़का इस लड़की को शादी करने जा रहा है, और आपका माँ पिताजी भी जानना चाहिए कि ये लड़का ठीक ठाक है, ताकि ये जब उनका माँ पिताजी आपका माँ पिताजी जब मिलेंगे, देन दे विल बी understanding. Then we will, this is what we say, we have earmarked 6 advocates in Delhi, even in Chennai, even in Bangalore, even in Chandigarh. We will help you to get a court marriage. अदरवाइज आप हर बारी में करेगा, यहाँ आकर के माँ पिता दिख नहीं रहा, आपका कम्युनिटी तो दिख नहीं रहा है, तो अपना जो मन में आएगा करेगा, रात भर सोते रहे, पार्टी करते रहे, दिन भर करेगा. आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी इज डूइंग, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप किस लिए आया है दिल्ली में, किस लिए आया है बेंगलोर में, एंड यू टू फुलफिल डेट फर्स्ट. उसके बाद में अगर नौकरी भी कर रहा है तो सेव मनी. शादी भी करना है तो भैया को बताओ, अगर भैया नहीं है तो हम लोग को बताओ, वी विल हेल्प यू टू सेटल डाउन. सो दिस एरिया इज वेरी सेंसिटिव. इट्स नॉट अगेन आई टेलिंग यू मोरल पुलिस, हम एडवाइस नहीं दे रहा. आई एम नोबडी टू टेल यू ये करो वो करो, बट आई एम टेलिंग यू द एक्सपीरियंस ऑफ द हेल्पिंग हैंड. हम आउट ऑफ लाइक लास्ट ईयर 2021 वी हैड 4072 केसेस, उसमें से 70% आर रिलेटेड टू दिस गर्ल्स इशू. कोई यहाँ रोस्टेस वाला उधर बैठ गया, इधर बैठ गया, बाद में प्रॉब्लम हो गया, लास्ट वीक भी हुआ, या किसी का साथ आप उसमें भाग गया, भागने के बाद कुछ दिन के बाद आपको छोड़ दिया, या आप अगर हमारा नोटिस गर्ल वहाँ में जो बाकी जो मेन लेन से जो वहाँ जाता है, यहाँ बीबी होते हुए भी वहाँ में 2-3 लड़की को सो कॉल्ड प्यार हो गया बोल के फिर यहाँ आ जाते हैं, उसको अलग सा रूम में रख देते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाता है. तो देयर आर सो मेनी इशूज which we have to be careful. We have to be very careful. Then what we have done now is that कि now ठीक है, वेलकम, दिस इज आवर कंट्री, हर जगह में हो सकता है, हर जगह में आप जा सकता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले आप अपना सुरक्षा, जैसा आपने पूछा है, योर सेफ्टी, योर सिक्योरिटी, योर जॉब सिक्योरिटी, और उसमें कौन है, फॉल बैक इन केस ऑफ इमरजेंसी. जब तक आप ये नहीं करेगा, अब तो गाँव में बैठा है, दे आर सिटिंग इन अ फार फ्लंग एरिया विलेजेस, दे वोंट हैव आइडिया व्हाट यू आर डूइंग. So this is what we want to tell. Some of the issues I can go on and on. Then, of course, one point before I forget, our notice boys and girls. Now let me come to the boys. There is these days, last year, out of 4,072 cases, 30% were our boys indulged into chatting with an unknown girl in internet, and they saw their all kind of their vulgar photo, the private part, this, that, and those fraudster, even we have arrested many of them. They'll record your nude body. उसके बाद next day से आपसे पैसा मांगना शुरू होता है. If you don't give money, we'll upload your photo. Many of them have paid so much of money, even lakhs of money, because they don't want to be exposed. So this is one area I think there are fraudster. अभी आई थिंक आपने पेपर में पढ़ा होगा, बेंगलोर में भी एक लड़का ने ऐसा करके उनको जब मनी एक्सटॉर्शन शुरू हो गया, देन ही कुडंट गिव द मनी, तो उन्होंने आत्महत्या भी, आई मीन ही हैड टू टेक हिज लाइफ. सो दिस इज वन एरिया ट्रेंड. आवर नोटिस बॉयज जो अकेला है कहीं भी हिंदुस्तान में, चाहे बैक होम हो, चाहे तुम यहाँ हो या दिल्ली में हो, तो रात में दिस चैटिंग बिजनेस शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. दे आर, आपको लड़की जैसा दिखाई देगा, आवाज भी आएगा, फिर बाद में वो सारा फोटो वोटो करा के आपको कर लेता है. देन नंबर 2, दिस इज समथिंग अनदर वेरी ग्रे एरिया. आवर गर्ल्स मैक्सिमम दे आर बिकम ए विक्टिम ऑफ सो कॉल्ड गिफ्ट फ्रॉड. जैसे कि हम लंदन से भेज रहा है आदमी, दे करके उसको बोलते एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं, पुलिस क्लियरेंस के लिए पैसा चाहिए, हमारा ये कस्टम क्लियरेंस के लिए पैसा चाहिए. Then you go and give money. Even I know from Arunachal, even she landed up to even Chennai airport. 4 of them landed last week in the Delhi airport. कि मेरा foreign boyfriend यहाँ आ गया, I want to help him out. Very funny, unbelievable
मतलब ये जो ना आई डू नॉट नो इतना हम अवेयरनेस कर रहा है हर दिन एवरी नाउ एंड हम करते हैं लगता है इट इज नॉट रीचिंग टू our girls or women who are in the back home. So yeah, this is another area you should not believe anyone on internet. There is no free gift. I repeat, कोई भी दुनिया में आदमी आपको बिना जाने फ्री गिफ्ट कोई नहीं देगा. उसके बाद दिन लॉटरी स्कैम, आपका नाम पे आ जाएगा, आपने लॉटरी जीता है, आपका नाम को उतार लिया है, आपको गूगल से उतार लिया है, आपका महिंद्रा से उतार लिया. आपको मेनी केसेस विद देम. दे फील ओ मैंने तो जीत लिया, देन ही डिपॉजिट 50,000 बोलता है और करने के लिए आपको अनदर ये तो 12 लाख का गाड़ी है, आपको और डिपॉजिट करना है. यू गो ऑन एंड ऑन. सो अनबिलीवेबली दिस इज अनदर स्कैम व्हिच इज गोइंग ऑन. आवर पीपल जल्दबाजी में विश्वास कर लेता है, उसको अच्छा सा स्तंभ बना के और एम्बेसी का लंदन का, यूके का, मॉस्को का बना के रहता है, उसको देख करके बोलता है ये तो असली होगा. सो दीज आर द वन एरिया दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर फ्रेंडशिप एक्सेप्टेंस. देयर आर मेनी केसेस जहां पे हमारा लड़की लड़का लोग, मैक्सिमम लड़की फॉरेनर को देख करके, उसका डीपी को अच्छा हैंडसम को देख करके फ्रेंडशिप बना लेता है. चैटिंग शुरू होता है. चैटिंग शुरू होने के बाद में आप भी फोटो भेजता है. बहुत ऐसा केस हुआ है जो आपका फोटो को मॉर्फ करके उसको बल्गर वे पे आपको न्यूड दिखा करके फिर आपको स्टार्ट ब्लैकमेलिंग. वन सेकेंड, ऐसा करके बहुत लोग दे केम डाउन टू दिल्ली, दे केम डाउन टू चेन्नई अपना बॉयफ्रेंड को मिलने के. इवन कुछ तो ऐसा भी केस है अपना हस्बैंड को भी छोड़ करके यहाँ आके उसका न्यू फाउंड बॉयफ्रेंड को मिलने आया. सो दीज आर अ वेरी वेरी बिजर्ड kind of phenomenon which you are saying security. Security doesn't mean only physical security. Security means you should not allow anybody to exploit you also psychologically, physically. Let them not exploit you money from your hard-earned money. So these are some of the issues हम every day हम help हैं deal कर रहे हैं. And for your information of your viewers, since it's very popular channel, we are having a blood bank in Delhi. Northeast Blood Bank. So I donate blood every 3 months. This is only for those students or those workers in unorganized sector जो गरीब है, who can't afford. Otherwise एक blood unit का आपको जो ना 5,000 6,000 बराबर हॉस्पिटल में जाता है. And number two, we have a scholarship for our Northeast who want to do UPSC. For that we have every year we conduct an invite applications, and by your achievement in class 10, 12 and graduation market and your income certificate. Then we have started recently a sports scholarship. This sports scholarship is that this is for those budding Northeast sportsmen, and this function we are going to hold at Itanagar by the first end of this October. So we will be holding we'll be disbursing the first Northeast sports scholarship. We want to see them for 4 years. We are going to give them a scholarship. So these are the few things as a police officer. Wo to hai hai, that's I'm doing. Apart from that, we are doing extra work apart from the job through helping hand by all our volunteers all over the country. So you have said a lot about the helping hands, sir. So you are running this NGO helping hands to serve the Northeast Indian citizens who are in distress. So how did it started? How we want to know how it started and how it's going on now. I told you how it started because that is influence of Mahatma Gandhi ashram. Number two, Gandhi's life, and most important point is my experience of struggling in my life. Since your is popular channel, again I want to tell you this. I want to say this: the exploitation, the discrimination I face, that has inspired me to do that. Now let me tell you 3 incidents. One, when I started my career as arts student in Zero, there is a very a discrimination to the arts student. When I got in class 12, I got second rank in all of the Arunachal Pradesh. So I was very happy. Even I worked during my summer vacation in forest department as a planter laborer. I'm very happy to tell you, I don't feel ashamed in Boa, Simla and other. Anyway, in the fish farm, I work with my daddy as a teka kam na, bolta hai na, ab isko kaam karega. So I got some money. When I got second rank in Arunachal Pradesh, I bought a big
chunk of sweets. I came running and I offered this sweet to all my friends and my people whom I know. There was one officer from Zero. He was a district level officer. He today is retired. When I gave a sweet to him, you know what he said? No, arts or science. Means are you arts or science? I said I'm from arts. He even without looking at me, he said, "Tiki hai, babu babu ban jayega." It really hurt me. You know, okay, oh my God, arts is it so hopeless or rotten? That was one discrimination. It inspired me to I in future life I'll not discriminate other. I'll not give importance to only to the size. Second, even in my home, I had one elder sister, my father's younger brother's sister, whom I very elderly, very well-meaning sister. When my brother went for a doctor, she gave her a patani soul, a dry meat, 300 rupees, accompany him up to the bus station at Zero Hapoli. When I got second rank, when I started my morning first day to Pasigat from my village, nobody came to even see me off. So I was holding my aluminum steel trunk. I was weeping all the way. Am I so worthless? Am I so rotten that even my Didi, whom I love from my heart, she even did not come and wish me, "Tum jaake acha se paro." So I wept all the way from Zero to not Lakhimpur. It really hurt me. And that hurt is still very fresh. Then third point, when I went to I was selected for the Ramakrishna Mission School, Narottam Nagar. I got first rank in the district, so I was selected. So I went to the Narottam Nagar. I was so happy. First time, बिजली आ रहा है, लाइट आ रहा है, नहाने का जगह है, साबुन मिल रहा है, water source to drink. Whether हमारा गांव में you have to go पानी लेने के लिए सुबह सुबह इतना ठंडा में जाके पानी ले आना पड़ता था. बहुत मतलब तो वहां गया था हम इतना खुश भगवान ने दिया. I was so happy. So I studied there for 20 days. 20 days का बाद में at that time principal स्वामी जी महाराज called me. बोला कि you have to go back. तुम्हें वापस जाना है. तुम अगला बार आएगा. I asked him why. He did not say कि होगा अगला बार आएगा. इस बार जगह कमती उमती है थोड़ा प्रॉब्लम है. It broke my heart. रोता रहा उसका सामने भी, लेकिन माना नहीं. मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट किया है, सर स्वामी जी मुझे इस रामाकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर के टी शर्ट को ले जाने दीजिए. वो भी हेजिटेंटली मुझे 2 टी शर्ट लेने दे दीजिए. मेरा वो उसको भी वापस 2 बोल के बोल रहा था. उस टी शर्ट को लेकर के मैं जीरो में वापस आ गया हूँ. गाँव में फिर पढ़ने लग गया. बहुत शर्म लगा अपना गाँव में फिर गाँव स्कूल में जाने के लिए. रात भर रोते थे. भगवान ने पता नहीं जब भी उस टी शर्ट को पकड़ करके जब भी देखता था बहुत दिल में क्या बोलेगा हम नहीं बता सकता है. रो करके हम बेचते थे. बाद में पता चला है मेरे जगह में मंत्री का बेटा को डालने के लिए मुझे वहां से निकाला गया है. और मुझे जब मैं आईजीपी बना, मुझे उसी स्कूल में हमारा होम मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर दाबी के साथ में हम दोनों को गेस्ट और चीफ गेस्ट के लिए चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए हमें भी बुला लिया था. नरोत्तम नगर रामाकृष्ण मिशन स्कूल. उस समय में मैंने जो भाषण दिया है, चीर के मैंने उंगली को बताया. इसी स्कूल ने मुझे जलील किया है. इसी स्कूल से मुझे निकाला गया है. वो दर्द, वो डिस्क्रिमिनेशन आज भी मेरा दिल में दर्द है. स्वामी जी लोग चुपचाप कुछ मैंने उसको पानी भी पिया नहीं. मैं ऐसा करके उस समय मैंने निकाल गया. देन थर्ड पॉइंट, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएनयू में पढ़ रहा था, एक बार भी घर नहीं गया. एक बार भी फिल्म नहीं देखा. बाहर फिल्म देखने नहीं गया. एक बार भी बाहर में खाना खाने नहीं गया. क्यों? क्योंकि मेरा पिताजी इतना मेहनत करके, मैं उसको इतना पसीना होते हुए हाथ में पूरा स्किन जो चमड़ा निकल गया, मेहनत करके हमको पैसा कमा करके पढ़ने जाओ बोल के बोला. तो वो जब भी मैं पैसा खर्च करने के लिए करता था, उसके पिताजी का हाथ का जो उसका स्किन ऑफ जो उंगली को अभी भी मतलब याद आता है. तो ऐसा करके जब मेहनत किया,
उस समय में मैं एक और उसी समय में मेरी जो उस 3 साल में मेरी छोटी बहन जो मेरा सबसे प्यारी जो मुझे बहुत प्यार करती थी वो मर गई जीरो में। माँ पिताजी ने बताया भी नहीं। उन लोग बताने से हम दुख होगा फिर अच्छा से पढ़ नहीं पाएगा बोल करके। जब हम आईपीएस बनने के बाद में तब जीरो में गया तब मेरी माँ ने धीरे धीरे करके मुझे बताया। 1 महीना में क्या बोले रोता रहा अपने छोटी बहन को मिस करके। चलो वो तो है ही है दुख भरी कहानी। दिल्ली में एक मैं बताता हूँ, हमें जेएनयू में स्टडी करने के लिए जो सोशियोलॉजी था मेरा, आपको जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में नई दिल्ली में जाना पड़ता था। उसमें जाकर के मटेरियल लिखना पड़ता था। मेरे साथ में अरुणाचल का उस समय का सीएम मंत्री सब लोग जेएनयू में भी डीयू में भी था। हम लोग जो रिसर्च करने के लिए जब वहाँ जाते थे तो हर दिन जब 1-2 बज जाता था उन लोग बाहर निकाल करके पिज़्ज़ा वुज़ा खा के पूरा यामाहा बाइक में आ करके हम तो एक छोटा सा 615 वाला बस में लेकर के उसी लाइब्रेरी में आके अपना बाहर में पिज़्ज़ा खाने के लिए पैसा नहीं था। 4-5 ब्रेड लाल जाम लगा के एक अपना बिस्लरी वाला खाली बोतल में पानी लगा के एक छोटा सा एक तो बैग में बांध करके छुपा कर रखता था। जब उन लोग बाहर जाने पिज़्ज़ा खाने चला जाता था हम कोना में चुपचाप बैठ करके पटापट खा करके अपना 4 पीस ब्रेड एक अंडा बॉईल वाला और वो ब्रेड जाम को पानी पी करके हम उसमें अपना स्टडी या डिजर्टेशन करता था। एक बार वहाँ का लाइब्रेरियन मुझे देख लिया तो मुझे पूछा, बेटा तुम बाहर नहीं जाते उन दोस्तों के साथ खाने के लिए खेलने के लिए? उन्होंने मुझे देख लिया कि ये लड़का ये बाकी बच्चा लोग तो इतना ये खा रहा वो खा रहा है पिज़्ज़ा खा रहा है लेकिन ये बच्चा तो कहीं बाहर जा ही नहीं रहा है। तो मैंने बताया नहीं अंकल हम मेरा यही थी क्या। वो मेरे बात समझ गया कि इनके पास पैसा नहीं है इस तरह का फुर्ती करने के लिए बाइक हुई ये को करने का हम लोग तो नहीं था। तो बोला बेटा मैं तुमको 1 महीना से देख रहा हूँ हर दिन आता है तुम ऐसा ही हम कोना में चुपचाप से खा करके करता है। कल के बाद जो भी किताब लेना है आप ले लो मेरे नाम पे, आप यहाँ मत आओ, 1 सप्ताह के बाद मुझे रिटर्न करने आ जाओ। बहुत अच्छा लगा। जब मैं आईपीएस बन गया, बनने के बाद में यहाँ में भी उस मिठाई का फिर याद आया। फिर मैंने मिठाई ले लिया अच्छा वाला, इस बार बहुत अच्छा वाला क्वालिटी मिठाई, एक्लेयर वाला मिठाई लेके पूरा बागा 615 उस गाड़ी में लेकर के सर को पहले देगा। वो मुझे बहुत प्यार करता था मतलब जो है ना, क्योंकि वो समझ गया कि ये बच्चा बेचारा बहुत मेहनत करता है, अकेला इतना तकलीफ से आके कर रहा है। मिठाई लेकर के गया तो पूरा अंदर में दौड़ के गया तो दरवाजा लॉक। तो मैंने पूछा उसको पियोन को, ये सर कहाँ चला गया? बोला 1 सप्ताह पहले मर गया उसका। That was one of the most क्या बोलता ना शॉकिंग। मैं उधर ही बैठ गया, 5 मिनट रोया, बस वापस आ गया। तो ऐसे करके बहुत जिंदगी में डिस्क्रिमिनेशन था। इवन हम आईपीएस जब ट्रेनिंग में दो आई गॉट द बेस्ट आईएएस आईपीएस ट्रेनिंग में मेडल मुझे मिला, बेस्ट ट्रेनी मुझे एस्प्री डी कॉर्प्स मेडल बोलता है उसको, सबसे अच्छा ऑफिसर को ट्रेनिस को देता है, मैंने वो मिला, यहाँ हैंग किया हुआ है। लेकिन जब हम ट्रेनिंग कर रहा था हैदराबाद में आईपीएस का ट्रेनिंग, उस समय का डीजीपी हरियाणा का बेटा हमेशा चिढ़ाता था कि तुम लोग तो कुत्ता खाते, बिल्ली खाते, बंदर खाते, क्या क्या करके हमेशा इंसल्ट। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीने के बाद में तो 1 दिन उसको बुलाया, चैलेंज किया, तू आओ। हाँ तो मुझे बोलता या तो तुम मरेगा या हम मरेगा, सबका सामने में चिल्ला करके क्या। वो बहुत डर गया उस दिन से। तब मैंने सबक सीखा जिंदगी में अगर तुम्हारा राइट के तुमको फाइट बैक करना है। ऐसा करते करते मेरा जिंदगी में ना ये सब इंसिडेंट ये जो डिस्क्रिमिनेशन था। और एक बार ये बोलूंगा रामाकृष्ण मिशन के बारे में जो नारोत्तम नगर कहीं न भूल ना जाए। हम क्लास 8 में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, जूनियर साइंस सेमिनार आया। उस साइंस सेमिनार में 0 से लोअर 7 से हमको सेलेक्ट हुआ। हम ईटानगर में गए, मेरा एक अंकल था, अभी उस समय एलडीसी था, उस समय वो पहले बड़ा था, उसका घर का रूम में हम लोग फ्लोर में सोया। सो के अपना मैंने आर्यभट्टा वो कॉटन से कपड़ा से वो बनाया था,
सुबह में उनका तो गाड़ी गुड़ा तो था नहीं, मुझे जल्दी जाना हो तो 9 बजे से शुरू है, हम 8 बजे निकल गया था, पूरा वॉक किया। वो वॉक करते समय में बारिश देने लग गया, अरे कहीं नहीं जाएगा, कैसा करेगा, इतना दूर है। तो उसमें बस स्टैंड था, अभी सेक्रेटरीट अभी तो सामने, पहले उसका पीछे में था, हम वहां रोक रहे हैं, तो एक जीप आ रहा है, ला वो देखा तो वही जीप रामाकृष्ण मिशन नरोत्तम वही स्वामी जी आ रहा है, वो एक अपना स्टूडेंट को एकदम आगे में बैठा के, पीछे खाली ड्राइवर और वो दोनों सिर्फ बैठा हुआ था। मैंने हाथ निकाला था थोड़ा रोकने के लिए, क्योंकि हम अपना आर्यभट्ट तक मेरा वो मॉडल को भी दिखाया, हम भी साइंस में भी जाना है, रुका नहीं, उन लोग अपना आप चले गए। हम बारिश दे रहा था, पूरा बारिश में भीग भीग करके भीग 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 करके मैं स्कूल में पहुंचा तो देखा तो मेरा तो पूरा मॉडल ही खराब हो गया, पानी भीग के मेरा पूरा कपड़ा भी भीग गया। वो स्वामी जी कोना में बैठ करके उसका स्टूडेंट को ऐसा ऐसा टपटपा रहा था, उसका मॉडल को टिक टाक कर रहा था। बहुत दुख लगा, क्या हम गरीब है इसीलिए गाड़ी में रोका नहीं, जब उसका गाड़ी खाली था, जब मैंने मॉडल को दिखाया कि हम भी उधर जाना है, क्या बोलेगा, बहुत दुख लगा। ये भी एक मेरा नहीं भूलने वाला। तो ऐसे कर करके मैं जो देखने वालों को, खास तौर से जो स्टूडेंट को, इसीलिए बता रहा हूं कि अगर जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, मुश्किलें तो आपको सामने आएगा, अब हिम्मत नहीं हारना है, जारी रखना है, रोते हुए अपना आंखों को पोंछ के फिर उठो। अगर तुम सपना देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, यही एक उपाय है, कोई मदद नहीं करेगा। जब मुझे इतना जलील सा आया ना, जब अब जेएनयू में पढ़ता था, जीरो में भी पढ़ता था, इतना ठंडा में भी हमको सुबह 4:30 उठना है, इतना ठंडा में कैसा उठेगा। बर्फ पानी रख करके सुबह में जो 4:30 होता था, कोको बोल के जो पूरा मुर्गी होता था, पूरा अपना आपको पानी पे के अपना आपको जापर मार के फेस में उठ उठ के हम लोग पढ़ाए। सो पॉइंट इज दैट कि आपका माँ पिताजी आपको सब कुछ दे सकता है या कुछ भी ना हो, अगर तुम्हारा दिल में इसे अगर तुम वो चाहत करने का नहीं आएगा, तो भगवान भी आपको मदद नहीं कर पाएगा। सो जो कुछ तुम करना चाहते, चाहे कोई भी हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, लॉ हो, यूपीएससी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी तुम करना चाहता है तो दिल से आना चाहिए। अगर दिल से आएगा तुमको कोई नहीं रोकता। इसीलिए ये सबको कहानी को बताया। और जिंदगी में कोई भी सक्सेस आराम से नहीं आता है। उस सक्सेस के पीछे आज मैं इतना मेडल उडल पहन के बैठा हुआ हूँ, कितने आंसुओं का इसका ये फल है, कितना तकलीफ सहने के बाद में ये मिला है। तो ये देखने वाला आज जो आपने हमें पूछा है, ये बाकी के लिए भी। और मैं लास्ट पॉइंट माँ पिताजी के लिए भी यही मैं कहूँगा, जो देख रहा है, आप भी अपना बच्चों को वो क्या चाहता है उसको जानो, आप क्या चाहता है उसको मत थोपो। हाँ, बच्चों के लिए ये भी बात बिल्कुल सही है कि माँ पिताजी जो बोलेगा आपका खराब के लिए कभी नहीं बोलेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप मैथ्स में जैसा हम है, हम मैथमेटिक्स में हमारा तो एक ही टीचर था क्लास 1 to क्लास 7 तक, हम फाउंडेशन था ही नहीं। अगर मुझे इंजीनियर बनो बोल के जबरदस्ती बना, आज मैं पागल होकर आत्महत्या कर लिया होगा, या तो मैं अभी होगा ही नहीं। तो यू मस्ट अपना बच्चे को, अपने स्टूडेंट लोग भी, पहले तो आप अपना जिंदगी में कुछ करना है तो यू हैव टू टेक एजुकेशन वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज एजुकेशन एक ऐसा एक माध्यम है जिससे तुम जिंदगी बदल सकता है, तुम्हारा जिंदगी बदल सकता है, तुम्हारा परिवार का जिंदगी बदल सकता है, देश का जिंदगी बदल सकता है। बस इसी सब के साथ सपना, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवोकिंग माई इनर कॉन्शियस ऑफ माई व्हाट आई फेल्ट। ठीक है, थैंक यू सर, अरुणाचल न्यूज़ के साथ बात करने के लिए, आपका इंस्पिरेशनल स्टोरी बताने के लिए। और सच में भी आज हमने भी रियलाइज़ किया था, मैं भी बचपन में आपका बारे बहुत सुनती थी, इवन मेरा पापा भी आपका, जो मेरा फादर है वो भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, आपके बारे में वो इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ जानता है, वो मुझे बताते भी रहते हैं आपके बारे में, इंस्पायर करता है। तो सच में भी आपसे बात करके बहुत इंस्पायर्ड हुआ हम लोग। और थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए, आपका इतना कीमती समय को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सपना, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट।